Very good morning, children. How do you do? Fine? Good. So, this is a grammar session, grammar video. So, from chapter 11, 12, 13, what did we see? हमने क्या देखा चैप्टर 11 एंड 12, 13 में? टेंस देखा है ना? टेंस विच इंडिकेट्स टाइम. ठीक है? टेंस विच रेफर्स टाइम. Right? Present tense, past tense, present tense, past tense and future tense, basic. Okay? Yeah. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने देखा और प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने देखा है ना. तो ये चैप्टर 14 में हम सिंपल पास्ट टेंस वी विल सी अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन आपका हैंड राइटिंग शुड बी नीट. In every session, in every video I am saying this, your handwriting should be neat. Write neatly. So please concentrate in your handwriting. Handwriting is very, very important. Got it? Yeah. So let's go for the topic. Simple past tense. Got it? Which means we are talking about the past tense. Past tense matlab which has got over, which has finished, which has got over. About yesterday, day before yesterday, last week, last month, last year, 15 days before, 10 days before, whatever it is. About last, past tense, that is called as simple past tense. Okay? Yes, let us go for the explanation. See, read these sentences. So, here some sentences is given. Let us see what it is. The children played during lunch break. See the highlighted words. Can you see? Everything it is in a past tense. Played. The girl left the building. Left. Leave का past tense. Left है. ठीक है. Left मतलब I am just saying the example. ठीक है. Understand the example. Left मतलब went. Go we will say no. Go का past tense went है. तो left मतलब went. Okay. Ritish climbed a ladder. Climbed. Ladder मालूम है? Ladder on the top. The building construction. Who does the building construction or painting work? They will climb up. No, in the ladder with the help of ladder. That is called ladder. Going up. Okay, they will climb in the ladder. Suraj ate a bun. See here. Picture is given now. Suraj ate a bun, which means past tense of eat is called as ate. Then the men built a bridge. The men built a bridge. यहाँ men प्लूरल में है. ठीक है. मैन का प्लूरल men है. built build है ना. building build. तो डी विल कम इन बिल्ड. बिल्ड का पास्ट टेंस बिल्ट है. ठीक है. ये प्रोनाउंसिएशन क्या है? बिल्ट. बिल्ट अ ब्रिज. सो सब दिस हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ब्स. ये वर्ब्स पूरा पास्ट टेंस में है ना. यस, दिस ओनली अबाउट द चैप्टर सेस. Again see some exercises are given here. I mean some explanations. The words in bold are verbs that are in a simple past tense. अभी मैंने बोला था ना. A verb in a simple past tense tells us about an action that has already happened in the past tense. बोला था ना. Already happened. So yesterday मतलब it is already happened. No, yesterday. It is finished. It got over. That's what already happened in the past tense. See, the birds chirped on the tree, making noise. Chirped matlab making noise on the tree. Birds, some unique sound, high pitch sound it will make. No, birds or insects. That is called sound. Chirped. Okay. Jasmine sang a song. Sung a song. Sang a song. That is past participle में आएगा sang. तो ये sang a song.
Sudhop wrote a letter. Sudhop ये नेम है, ओके, बॉय नेम ऑफ अ बॉय. Sudhop wrote a letter. See this verbs all, it is in a past tense. That's it. Already which has happened. Finished. Okay. The simple past tense of verbs can be written in different forms. ठीक है, ये different forms है past tense का, different forms. Let us see what are the forms. By adding t to the end of the verb. T, they will add t. See for what are the verbs they adding t. Lena dreamt of buying a new bicycle. So mostly we will use dreamt. Sometimes we use dreamed, like dreamed. लेकिन मोस्ट ऑफ दी वर्ड वी आर यूजिंग ड्रेम्ट ओनली. ठीक है, ड्रीम का पास्ट टेंस क्या है? ड्रेम्ट. तो शी ड्रेम्ट ऑफ बाइंग न्यू बाइसाइकिल. ड्रीम. ठीक है, ड्रीम का पास्ट टेंस क्या है? ड्रेम्ट. द गर्ल वाइप्ड बिटरली. ठीक है, वाइप्ड. क्राई वी विल से ना, क्राई. या तो वाइप्ड. वीप का पास्ट टेंस वाइप्ड है. ये vocabulary है. सम वर्ड्स नो वी विल हैव मोर vocabularies फॉर इट, डिफरेंट वर्ड्स, लेकिन मीनिंग सेम होगा. ओके. वी स्लेप्ट early last night. स्लेप्ट पास्ट टेंस ऑफ स्लीप स्लेप्ट है. गॉट इट? अंडरस्टूड? C and D again. Next rule here, by adding ed to the at the end of the verb. Ed भी add कर सकते हैं. See for what are the verbs adding ed. The soldiers marched during the parade. March first, you know, left right will go, no, march first, marched. तो यहाँ marched, got over, finished action, past action, marched. Saurav enjoyed the school sports day. Enjoyed, past tense, enjoyed. Shilpa braided her hair in the morning. Braided मतलब no, decorated. I think she is Shilpa. ठीक है, so braided her hair मतलब decorated her hair. Decorated with some clips or pins. Okay, so any bands with their any band, she decorated her hair. Understood? Yes, the third rule is by changing the verb form. So verb form itself we will change. See, Tuhin ate an apple. So ate का present tense क्या है? Eat. तो यहाँ past tense ate. Change हुआ है ना verb. तो यहाँ हमने सिर्फ ऐड किया एक वर्ड और दो लेटर, सॉरी वर्ड नहीं लेटर, एक लेटर और दो लेटर हमने यहाँ ऐड किया. लेकिन यहाँ थर्ड रूल में हम ऐड नहीं करेंगे, हम जस्ट चेंज द वर्ड वी विल चेंज इट. सी एट. इट का पास्ट टेंस एट. सी का पास्ट टेंस सॉ. वेयर का पास्ट टेंस ओर, है ना? Yes, see, Rohit saw a bear in the zoo. In zoo, he saw a bear. Got it? Saw. Reena wore a new dress. Wear का past tense wore. She wore a new dress. Easy ना, very simple and easy है. ठीक है, लेकिन इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा है. But it is very simple and easy. Okay, don't get fear. It is very simple and easy. You have to do it intensely, so you will finish it very soon. Shall we go for it? हाँ, only 4 divisions. Okay, बहुत ज़्यादा नहीं. Yeah. See, change these sentences from the simple present tense to the past tense. तो यहाँ present tense में दिया है, हमको past tense में change करना है. See. Uday helps Mukal with the homework. Uday helps Mukal with the homework. Helps present tense है, हमको past tense में लिखना है.
तो उदय हेल्प्ड, ईडी है ना, ईडी ऐड करना है, हेल्प्ड मुकल विद दी होमवर्क, वेरी सिंपल. सी सरिता रीड्स मैगजीन इन द आफ्टरनून, तो रीड्स वर्ब है ना, फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब क्या है. इफ यू फाउंड आउट द वर्ब तो यू कैन चेंज द वर्ब एंड राइट वेरी इजीली. ओके, सी सरिता रेड, यहाँ प्रोनाउंसिएशन रीड नहीं है बिकॉज ये पास्ट टेंस है, तो प्रोनाउंसिएशन रेड है. ठीक है, READ रेड है. सरिता रेड मैगजीन्स इन द आफ्टरनून. द बैंड प्लेज एट द फंक्शन, द बैंड प्लेड. ठीक है, पास्ट टेंस क्या है, प्लेड एट द फंक्शन. कथा गोज टू स्कूल, ये नेम है. ठीक है, डोंट आस्क मी मैम व्हाट इज दिस, ये नेम है. तो फर्स्ट आई हैव सेड नो, वर्ब आपको मालूम होना चाहिए ये सेंटेंस में वर्ब क्या है. ठीक है, इफ यू फाउंड आउट दैट इज वेरी इजी टू चेंज इट. सी कथा गोज, तो वेंट, कथा वेंट टू स्कूल, सिंपल है ना. द लिचीज लुक डिलीशियस, ये फ्रूट है, फ्रूट का नेम है लिचीज. ठीक है, द लिचीज लुक्ड डिलीशियस, डिलीशियस मतलब नो टेस्टी, फूड है ना. हाँ, तो सम नहीं, ऑल फ्रूट्स एंड फूड्स द टेस्ट वी वोंट से ब्यूटीफुल एक्सीलेंट, वैसा हम नहीं बोलेंगे, डिलीशियस. सो फूड टेस्ट है ना, तो वो टेस्ट हम डिलीशियस बोलेंगे. तो यहाँ सी delicious, looked delicious, got it. Next, the fisherman go out on a boat, the fisherman go out on a boat. go है ना, तो हमको चेंज करना है. the fisherman went out on a boat, बाकी सब you can copy from the question, लेकिन ये verb alone आपको चेंज करना है. ठीक है, went. Bina keeps the money safely in her purse. Bina kept, past tense क्या है, keeps का past tense kept the money safely in her purse. See the next one. Manoj sharpens his pencil by the bin. Sharpens, verb क्या है, sharpens, तो Manoj sharpened, ED will come, past tense, sharpened his pencil by the bin. ठीक है, see the picture is given here, dustbin. Okay, the monkeys ate peanuts, monkeys ate peanuts. eat peanuts, तो eat हमको चेंज करना है ate, वेरी सिंपल, आपको मालूम है ate. ठीक है, बाकी सब फ्रॉम द क्वेश्चन यू कैन कॉपी इट, वेरी सिंपल एंड इजी. सी द टीचर स्पीक्स टू द स्टूडेंट्स, स्पीक्स है ना वर्ब, तो कैसे चेंज करना है, स्पोक. द टीचर स्पोक टू द स्टूडेंट्स, द टीचर स्पोक टू द स्टूडेंट्स. Finished. Then next division. It was easy, no? Yes. Complete these sentences by using the simple past tense form of the words in the box. Good. तो यहाँ बॉक्स में words given, it is given दिया है, तो आपको ये चेंज करना है. See, it is given in a present tense में दिया है, लेकिन आपको while writing here no in the dash आपको चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है. ठीक, दैट्स वाई मैंने बोला था आपको इंग्लिश, रीड द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, whatever lesson I am teaching you, read it and listen to the video so that something English you are listening while listening no you can understand the more you listen more you understand, इसीलिए मैंने बोला था. तो see this now ये division if you read itself you can understand in which dash in which question what answer will come, while reading itself you can understand, लेकिन for that no practice should be there. लेकिन आप लोग इंग्लिश
not at all listening English, not at all reading English. टच भी नहीं कर रहे हैं आप लोग इंग्लिश को, है ना. इंग्लिश नोट और इंग्लिश बुक टच भी नहीं कर रहे हैं. सो इफ यू बी लाइक दिस, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? डोंट डू दैट. Read English textbook, read this grammar book, listen the videos 2-3 times. One time if you watch the video, that is really not enough my dears. At least आपको 2 बार 3 बार देखना है वीडियो. ठीक है, ग्रामर का वीडियो पक्का आपको 2 बार 3 बार देखना है. ओके. यस. The man drew the bus carefully in the rain. ड्राइव है ना, ड्राइव का पास्ट टेंस ड्रू. ड्राइव द कार प्रेजेंट टेंस है, ड्रू द कार पास्ट टेंस है. ठीक है. द चाइल्ड फ्लू अ पेपर प्लेन, फ्लाई प्रेजेंट टेंस है, फ्लाई का पास्ट टेंस, फ्लू अ पेपर प्लेन. अंडरस्टैंड? See the next one. The cat drank the milk from the saucer. This is the saucer. You know, no? Cup and saucer. तो यहाँ saucer. It drank the milk from the saucer. तो drink का past tense क्या है? Drank. है ना? See, drank. The Titanic sailed from Southampton to New York from the place they are saying. Okay. Southampton to New York. Sailed. So sail का past tense sailed. Very easy. So लेकिन पहले आपको ये read करना है. What are the words given there? Then ये dash ये fully है ना. ये क्वेश्चंस आपको रीड करना है. देन यू कैन अंडरस्टैंड, सम आइडिया विल कम. देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन पिक अप फ्रॉम दिस ब्रैकेट्स. टाइटैनिक sailed from Southampton to New York. Okay. Next question is, the bee stung the little boy. String. String का past tense strung. Strung the little boy. We will say no, bite. हाँ, तो यहाँ bee strung the bee, honey bee है ना, तो bee strung the little boy, bite the little boy. We left the playground as soon as it began to rain. When it began to rain, they left the playground. तो leave का past tense क्या है? Left. See, leave. तो leave का past tense left. Very simple this is. Anandi broke the vase by mistake. Vase मतलब flower wash है ना. Flower, color flower, like a pot we will keep, no? Design pot in interior, in home. Flower wash. That is called as flower wash. Okay. So broke. Break का past tense क्या है? See here, break. Break का past tense broke. Cook का past tense cooked. Lean का past tense leaned. Drill का past tense drilled. That's all. Very, very simple. You chef cooked a simple meal for himself. Cooked. The tired man leaned against the lamp post. Leaned. Okay, in a comfortable manner, he leaned. Tanya drilled a hole in the wall. Drilled. She made a hole. Drilled. Drill, you know, no? In a wall they will drill. So with a machine. Hole. They will make a hole with a machine. That is called as drill. Finished this. Easy, no? Very, very easy and simple. So balance only 2 exercises are there. That too very, very simple hai. See, this is what. God. Write 6 sentences in the simple past tense using be, do and have.
मैंने पहले आपको बोला था ना, बी फॉर्म वर्ब्स, डू फॉर्म वर्ब्स एंड हैव फॉर्म वर्ब्स. व्हाट्सएप भी मैंने किया था, पीडीएफ भेजा था इसका ना, पीडीएफ मैंने भेजा था while taking first lesson or second lesson, I don't know, I think second lesson. Book back exercise, while teaching book back exercise. तो बी फॉर्म वर्ब, डू फॉर्म वर्ब एंड हैव फॉर्म वर्ब. तो हमको यहाँ पास्ट टेंस में लिखना है. सी हियर, वेरी सिंपल सेंटेंसेस आई हैव रिटन फॉर यू. साई कृष्णा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. तो वॉज पास्ट टेंस में है ना. दे वेर इन केरला, वेर पास्ट टेंस में है ना. संजय नेम, ठीक है, साई कृष्णा नेम, ओके, एक्सक्यूज मी. संजय हैड कॉफी, had past tense. Radha name of a girl, Radha did her homework, did past tense. Ravi was happy, was past tense. My friends were at work, were past tense. ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी द सेम सेंटेंस आपको कॉपी करना है, वो नेसेसरी नहीं है. लेकिन वॉट एवर यू राइट, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी करेक्ट. Spelling mistake should not be there. Be conscious in that. Okay, concentrate in that. Spelling mistake should not be there. And sentence formation है ना, sentence construction गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, yes. So this is very simple sentences I have thought and I have written for you. So better to copy this. ठीक है, and this is the last division. Very simple and easy. हाँ, see here. Played, okay. ये played है, ये asked है, ये क्या है, disagreed है, gave, lost, then dropped, entered. ठीक है, तो यू जस्ट रीड दिस आफ्टरवर्ड्स. तो मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, सी. मे आई लीव ईयरली, जॉन आस्क्ड द टीचर. शैल आई गो ईयरली, ओके, आस्क्ड द टीचर, क्योंकि हमने बोला था ना पास्ट टेंस, पास्ट टेंस. तो विद द हेल्प ऑफ दिस 1 2 3 यहाँ दिया है ना, तो विद द हेल्प ऑफ दिस puzzle and with the help of this question you can guess and write this answer. ठीक है, Reena disagreed that the apple was sour. She found it delicious. तो like lemon, it is not sour, it is delicious, it is tasty, it is good. Disagreed मतलब she didn't agree. Okay, Satbir lost name of a person. ठीक है, Sadbir lost his pen at school. Lost, missed. Okay, Iram entered name. ठीक है, name of a person. Iram entered the garden through the iron gate. Entered, came inside. Entered the garden through the gate, iron gate. Got it? This one below, see. The children played with their toys. Played, past tense of play, played. Sanjay gave his shoes to his brother for a day. Gave, past tense of give, gave his shoes to his brother for a day. Geeta dropped the book from her hand by mistake. Dropped मतलब she put down, she dropped it, fell down by mistake. ठीक है, by mistake. easy है ना, very simple and easy. past tense है ना, very very simple and easy, because that things which got over, we are talking about the things which got over, that is called as past tense. About yesterday or day before yesterday or last week, last month, 10 days before, last year, that things. Okay, so handwriting should be neat, so please write neatly and carefully. Have 2 pencils with you, sharp and write neatly.
If any mistake you have done, erase neatly and then rewrite. ठीक है? Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Be safe at home. Okay. Thank you.